Hello friends, my name is Deepak Kaldhone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे that is the question paper of assistant chemical analyzer in forensic science laboratory. So this question paper is of assistant chemical analyzer in chemistry division which was conducted by forensic science laboratory Maharashtra. And this examination was conducted on 7 October 2017. So इस क्वेश्चन पेपर में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट और असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर. सो इस क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे. यह क्वेश्चन पेपर आपके जो आने वाले फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट होती है या जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट या असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर पोस्ट, ये सारे पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन पेपर बेनिफिशियल रहेगा. एज वेल एज जो आंध्र प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो रिक्रूटमेंट आया है साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो उसके केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिवीजन के लिए यह क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उसका करेक्ट आंसर क्या है इसको हम देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम विथ एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरफेरेंसेस ऑकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ refractory oxides CaO, P2O5 and CaO, SiO3. It can be eliminated by, तो इसके 4 ऑप्शन दिए. A. Changing air acetylene flame to nitrous oxide acetylene flame. B. Decreasing oxygen concentrations. C. Adding of a releasing agent. And D. Using fuel rich flame. और इसके 4 ऑप्शन दिए गए नीचे. तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए एंड सी ओनली, देन ऑप्शन 3 में दिया गया है ए एंड डी ओनली, एंड ऑप्शन 4 में दिया है ए बी सी एंड डी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए बी सी एंड डी. Then next question is iron third is best determined by UV visual spectroscopy with. तो उसके 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है थायोसाइनेट, देन सेकंड ऑप्शन है एसीटेट, देन थर्ड ऑप्शन है साइनाइड एंड फोर्थ ऑप्शन है डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज थायोसाइनेट. Then next question है in the atomic absorption spectroscopy neon plus gaseous ions bombarded the cathode, that is halo cathode lamp and eject metal atoms from cathode. The process is referred to as. First option दिया गया है sputtering, second one ejectioning, third one excitation and fourth one is ionization. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्पुटरिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ न्यूक्लाई इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इट इज कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है बोरॉन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, थर्ड ऑप्शन है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लेम फोटोमेट्री द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन आर ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ. तो उसके 5 ऑप्शन में से, तो उसके 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन 2 में दिया है लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन 3 में दिया है डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑप्शन 4 में दिया है हाई टेम्परेचर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम spectrophotometers a prism is used with a grating
which have the following advantages. First option है, it gives double dispersion and reduces stray light. Second option है, it eliminates maximum light. Third option है, it reduces red light. And fourth option है, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, that is it gives double dispersion and reduces stray light. Then see next question. In UV visible spectroscopy, for optimum dispersion, the slits should be put. First option है as far as possible. Second option है as near as possible. Third option है anywhere near each other. And fourth option है none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. Then next question है in scanning electron microscopy, the electrons in the beam interact with the sample and give information about the surface dash dash and dash dash. तो उसके ऑप्शन में दिया है फर्स्ट में टोपोग्राफी एंड मॉर्फोलॉजी, सेकंड में दिया है टोपोग्राफी एंड मोनोग्राफी, थर्ड में दिया है पोलैरोग्राफी एंड सैम्पलिंग एंड फोर्थ में दिया है नन ऑफ दिस. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टोपोग्राफी एंड मॉर्फोलॉजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल बिकॉज. फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सेकंड वन इट इज वेरी स्पेसिफिक, थर्ड इट इज सेंसिटिव एज वेल एज स्पेसिफिक, एंड फोर्थ इट इज नाइदर सेंसिटिव नॉर स्पेसिफिक. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is it is sensitive as well as specific. Then next question है scanning transmission electron microscope can be used for studies of particulates and thin foil having beam of diameter as small as. तो उसके फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 नैनोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 2 नैनोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 3 नैनोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 नैनोमीटर. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, that is 2 nanometer. The next question is the emission spectra are of. First option 2 types, second option single type, third option 3 types, fourth option 4 types. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, that is 3 types. The next question है match the following. तो वन साइड में पहला ए में दिया है पेलोरोग्राफी, बी में दिया है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, सी में दिया है ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड डी में दिया है मैक्सिमा सप्रेसर. देन सेकंड साइड में फर्स्ट में दिया है N2 गैस, सेकंड में दिया है ट्राइटोन X100, थर्ड में दिया है KCl, फोर्थ में दिया है जारोस्लाव हेरोस्की. सो इसका जो मैचिंग करके जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन. दिस इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलैरोग्राफी द इक्वेशन दैट इज 607 n d raised to 1 of c m raised to 2 by 3 t raised to 1 by 6 into 1 plus a, then d raised to 1 of t raised to 1 by 6 divided by m raised to 1 by 3. Then solution factor, this is electrode factor and this is correction factor, is known as. तो उसके फोर्थ ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है लिंगेन एंड लोवर्गिन इक्वेशन, थर्ड है इल्कोविक इक्वेशन, सेकंड वन इज इल्कोविक इक्वेशन, थर्ड वन इज हिरोस्की इक्वेशन एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन amperometry the potential applied between the indicator electrode and reference electrode is. First option change slowly, second option change rapidly, third option kept constant and fourth option is none of this. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is kept constant. The next question है in the amperometric titration which one is the best example of using rotating platinum electrode? Option number 1 है निकेल with DMJ,
Option 2, lead with dichromate ion. Option 3, arsenite by KBrO3. Then option 4, CuCOPT with अल्पाइन नाइट्रोस बीटा नेप्थॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वॉल्यूमेट्री टेक्निक फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट कौन से देखो, ए स्टेटमेंट दिया है, इट इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल करंट बिहेवियर ऑफ अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड इन एनालाइट। देन बी स्टेटमेंट दिया है, in which potential of the microworking electrode is varied and the resulting current is recorded. Then statement C दिया है, where cathodic current is positive and anodic current is negative. And statement D दिया है, if the analyte solution is dilute, the current will reach a limiting value. उसके नीचे फिर पूछा गया है, which of the above statement is or are correct one. तो उसके 4 ऑप्शन में से पहले ऑप्शन में दिया है ओनली ए इज करेक्ट, बी में दिया है ए बी एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन में दिया है बी सी एंड डी ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है ए सी एंड डी ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी सी एंड डी ओनली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन stripping volumetry analysis of solution in the range of dash dash to dash dash is possible. Option 1 में 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 9 m. Option 2 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 11 m. Option 3 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 10 m. And option 4 is 10 raised to minus 9 to 10 raised to minus 12 m. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 9 m. Then the next question is, the most important requirements for electrogravimetric analysis is or are. So first, that is statement A, the deposition of the substance of interest must be complete. B statement A, the deposit must be inert, that is it may not undergo any change in its weight during the process of electrolysis. Then statement C है, the deposit must be of known composition. Then statement D है, the deposit must adhere firmly so that the electrode can be raised and weighed without loss. Which of the above statement is correct, or which of the above statement are correct? तो ऑप्शन 1 में दिया है A only, ऑप्शन 2 में दिया है ए एंड बी ओनली, ऑप्शन 3 में दिया है ए सी एंड डी ओनली, एंड ऑप्शन 4 में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वॉल्यूमेट्री टेक्निक सब्सटेंस फ्रॉम एनालाइट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड एट अ माइक्रो इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी। तो ऑप्शन 1 डीपोलराइजर, ऑप्शन 2 पोलराइजर, ऑप्शन 3 सेमीपोलराइजर, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज डीपोलराइजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोग्राविमेट्री व्हेन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ एन EMF 2 to 3 volts, then the following reaction occurs. तो रिएक्शन दिया है Cu++ plus 2 electron, reaction gives Cu, then 2H plus 2 electron gives H2, then 4OH minus gives O2 plus 2H2O plus 4 electron. Which ions go for reduction and deposited? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है Cu+, सेकंड ऑप्शन में दिया है H+, थर्ड ऑप्शन में दिया है Cu++ एंड H+, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज Cu+। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लिक वॉल्यूमेट्री कैन बी अप्लाइड टू डैश डैश इलेक्ट्रोड एज वेल एज टू डैश डैश mercury drop and
to reaction for which stripping analysis is dash dash due to dash dash irreversible electrode process. तो उसके ऑप्शन फर्स्ट में दिया है स्टेशनरी, देन सिंगल, इनएप्लीकेबल, हाईली। तो यहाँ पे 4 फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसके 4 ऑप्शन है हर एक ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में मूविंग, सिंगल, एप्लीकेबल, स्लोली। थर्ड ऑप्शन में स्टेशनरी, डबल, इनएप्लीकेबल, हाईली। एंड फोर्थ ऑप्शन में मूविंग, डबल, एप्लीकेबल, स्लोली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टेशनरी, सिंगल, इनएप्लीकेबल एंड हाईली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एम्पलीट्यूड, सेकंड ऑप्शन में दिया है पीरियोडिसिटी, थर्ड ऑप्शन में दिया है वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस फॉर इमिशन एनालिसिस इज। फर्स्ट ऑप्शन 200 plus 300 nanometer, second option 200 plus 500 nanometer, third option 250 plus 400 nanometer, option 4 400 plus 600 nanometer। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 250 plus 400 nanometer। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम्पेरोमेट्री आइदर द titrant, that is reagent, or the species being titrated should be। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है रेडियो एक्टिव, सेकंड ऑप्शन में दिया है फोटो एक्टिव, थर्ड ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रो एक्टिव, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है गैस सेंसिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रो एक्टिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द polarographic method may be used for the determination of which of the following inorganic anions। फर्स्ट ऑप्शन है साइनाइड, सेकंड ऑप्शन है ब्रोमाइड, थर्ड ऑप्शन है डाइक्रोमेट, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैंपलिंग ऑफ गैस फिल्ड सिलेंडर इज डन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैक सैंपलिंग, सेकंड ऑप्शन है फ्लशिंग सैंपलिंग, थर्ड ऑप्शन है एम्बिएंट सैंपलिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है रैंडम सैंपलिंग। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटेंशन फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेशनरी फेज, सेकंड ऑप्शन है मोबाइल फेज, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ HPTLC। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इट रिक्वायर्स एन इंटरनल स्टैंडर्ड, सेकंड ऑप्शन में दिया है इट इज नॉट यूजफुल इन हर्बल एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है इट कैन नॉट बी फुल्ली ऑटोमेटेड, फोर्थ ऑप्शन में दिया है द मोबाइल phase consumption of sample is high। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट कैन नॉट बी फुल्ली ऑटोमेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है TLC इज अ सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन। ऑप्शन 1 solubility, ऑप्शन 2 adsorption, ऑप्शन 3 partition, एंड ऑप्शन 4 fractional distillation। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज adsorption। The next question है which of the following statements about pre-amplifier, IF amplifier and RF amplifier is wrong। तो स्टेटमेंट 1 है the outputs of IF and RF amplifiers are adjustable। सेकंड स्टेटमेंट है a pre-amplifier is located near or inside a probe। थर्ड स्टेटमेंट है दे आर ऑल फ्रीक्वेंसी टर्नेबल एम्पलीफायर्स, एंड फोर्थ वन इज RF एम्पलीफायर हैज अ लीनियर डिपेंडेंस ऑफ एटोनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिग्नल्स विल डाइइथाइल ईथर गिव इन PMR स्पेक्ट्रा। ऑप्शन 1 2 में 2, 3 में 3, एंड ऑप्शन 4 में 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
The next question is the absence of double bond at about 2800 centimeter inverse in the IR spectrum of unknown organic compound eliminates from consideration the possibility of the ऑप्शन दिए फर्स्ट में दिया है एसिटोफिनॉल, 2 में दिया है एल्डिहाइड, 3 में दिया है कीटोन एंड 4th में दिया है ईस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज एल्डिहाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मॉलिक्यूल absorbs UV or visible light of frequency V or wavelength lambda, an electron undergoes a transition from a lower to a higher energy level. The energy difference delta E is given by फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, सेकंड ऑप्शन में दिया है डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी न्यू, थर्ड ऑप्शन में दिया है डेल्टा E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन में डेल्टा E इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूवी visible spectroscopy of organic compound, the N to sigma star electronic transition which arises in saturated compounds containing the heteroatoms sulfur, nitrogen, bromine and iodine is of less importance because first option दिया है they are inactive, second option है their absorption is just above 700 nanometer, थर्ड ऑप्शन है देयर एब्सॉर्प्शन इज जस्ट बिलो 200 नैनोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है द बॉन्ड रप्चर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 देयर एब्सॉर्प्शन इज जस्ट बिलो 200 नैनोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम द टर्म एक्सोक्रोम इज यूज्ड टू डिजाइग्नेट ग्रुप्स possessing फर्स्ट ऑप्शन दिया है bonding electron pairs conjugated with a pi bond system, second option है non-bonding electrons pair conjugated with a pi bond system, third option है bonding electron pair conjugated with a sigma bond system and fourth option है non-bonding electron pair conjugated with a sigma bond system। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Then next question is the strength of Earth's magnetic field is about dash dash gauge। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 0.10, सेकंड ऑप्शन में 0.57, थर्ड ऑप्शन में 0.27 एंड फोर्थ ऑप्शन में 0.37। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द dash dash shift is the position of an absorption peak relative to that of a reference compound, usually tetramethyl saline। तो फर्स्ट ऑप्शन में रेड, सेकंड में दिया ब्लू, थर्ड में केमिकल, फोर्थ में रेड एंड ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है केमिकल शिफ्ट दैट इज थर्ड ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन dash dash NMR spectral determination mostly carbon tetrachloride and deuterochloroform are used as solvent for dissolving the samples। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है H1, सेकंड ऑप्शन में C13, थर्ड ऑप्शन में N15 एंड फोर्थ ऑप्शन में F19। तो इसका करेक्ट आंसर है H1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन dash dash analysis gas chromatograph separates the components of the mixture while the mass spectrometer gives the spectral information via fragmentation। फर्स्ट ऑप्शन में दिया GC, सेकंड में दिया EMS, थर्ड ऑप्शन में GCMS, फोर्थ ऑप्शन में केमिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 GCMS। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 GCMS। The next question है the loss of an alkene fragment by a cyclic rearrangement of a carbonyl compound with dash dash hydrogens is termed as MCEL apathy rearrangement। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है उसका अल्फा, बी ऑप्शन में दिया है दैट इज सेकंड ऑप्शन में दिया है बीटा,
थर्ड ऑप्शन में दिया है गामा एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। Then next question is, if an organic compound is not absorbed in UV radiations, it means that it does not contain. फर्स्ट ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है डेटिव बॉन्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following quantities is not changed at a different magnetic field strength? फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियर स्पिन पॉपुलेशन इन एन एनर्जी स्टेट, थर्ड ऑप्शन है कपलिंग कांस्टेंट J एंड फोर्थ ऑप्शन है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियाई विथ नॉन जीरो स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कपलिंग कांस्टेंट J। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस आयन पीक एट M/Z43 इन द मास स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है मिथॉक्सी ग्रुप, सेकंड ऑप्शन है कार्बोनिल ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ ऑप्शन है एसिटिल ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which proton readily exchanges with deuterium? ऑप्शन 1 में दिया है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, ऑप्शन 2 में हाइड्रोकार्बन प्रोटॉन, ऑप्शन 3 में एरोमेटिक रिंग प्रोटॉन एंड ऑप्शन 4 में हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 दैट इज हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑप्शन है टेट्रामिथाइल सलाइन, सेकंड ऑप्शन है ट्राइमिथाइल सलाइन, थर्ड ऑप्शन है डाइमिथाइल सल्फोन एंड फोर्थ ऑप्शन है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज टेट्रामिथाइल सलीन। देन next question is, in mass spectrometry the molecular rearrangements the most frequently encountered example is the MC-Lapati rearrangement which involves the transfer of, first option में दिया है alpha hydrogen atom in an unsaturated system via a low energy 6 members transition state, second option में दिया है n atom in aldehyde system, देन थर्ड ऑप्शन में दिया है बीटा हाइड्रोजन एटम इन एन अनसैचुरेटेड सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है गामा हाइड्रोजन एटम इन एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल्स विल बी ऑब्टेन्ड इन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोपेन टू ऑल। ऑप्शन 1 में 1, 2 में 2, ऑप्शन 3 में 3 एंड ऑप्शन 4 में 4। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन एवरी सैंपल a small amount of dash dash is added as a reference. Option 1 dimethyl formamide, option 2 dimethyl sulfoxide, option 3 tetramethylsilane and option 4 tetramethylsilanol। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। Then next question is, the peak of highest intensity in a mass spectrum is referred to as the, first option front peak, second option base peak, third option molecular peak, fourth option back peak। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज बेस पिक। The next question, in NMR spectroscopy the tau scale value is, first option tau is equal to 10 minus sigma, second option tau is equal to 10 minus beta, third option tau is equal to 10 minus delta and fourth option tau is equal to 10 minus gamma। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। The next question है, which of the following is the Henderson-Hasselbalch equation? तो फर्स्ट ऑप्शन है pH is equal to pKa plus log acid upon salt, सेकंड ऑप्शन है pH is equal to pKw divided by pOH, थर्ड ऑप्शन है pH is equal to pOH upon pKw एंड फोर्थ ऑप्शन है pH is equal to pKa plus log
salt upon acid. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग salt upon acid. सो यहाँ तक सारे प्योर केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे. इसके आगे थोड़े से बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Which serological technique utilizes competition between radioisotopes, labeled antigen and test antigen for detection? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फ्लो साइटोमेट्री, सेकंड ऑप्शन में दिया है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है रेडियो इम्यूनो एसे एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है इम्यूनो फ्लोरेसेंस एसे. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज रेडियो इम्यूनो एसे. द नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एनालिसिस ऑफ द ब्लड इन्वेस्टिगेटर्स लुक फॉर. तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आरएनए प्राइमर्स, सेकंड डीएनए फिंगरप्रिंट्स, थर्ड डीएनए प्रोब्स एंड फोर्थ न्यूक्लियोसोम्स. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बफर इज मैक्सिमम एट pH इक्वल टू डैश डैश ऑफ ए वीक एसिड used in the preparation of the buffer. फर्स्ट ऑप्शन है 2 pKa, सेकंड ऑप्शन है pKa, थर्ड ऑप्शन है pKa प्लस 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है pKa माइनस 1. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज pKa. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक palindrome sequence and the site of cleavage identified by restriction endonuclease E. coli H. तो फर्स्ट में दिया है G डाउनवर्ड एरो डबल A डबल T C, सेकंड ऑप्शन में दिया है A डाउनवर्ड एरो A G C डबल T, थर्ड ऑप्शन में दिया है G डबल T डाउनवर्ड एरो डबल A C, फोर्थ ऑप्शन में दिया है C डाउनवर्ड एरो डबल A T G C. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज isoenzymes are enzymes that option 1 catalyze the same reaction, option 2 do not catalyze the same reaction, option 3 have same Km and Pmax, option 4 have identical amino acid composition and sequence. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ऑप्शन 1 डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन 2 ट्रांसलेशन, ऑप्शन 3 क्लोनिंग, ऑप्शन 4 ट्रांसक्रिप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 डीएनए रेप्लिकेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन है the head stable isozyme of alkaline phosphatase which is inhibited by phenylalanine and is characteristically seen in the circulation of cases of carcinoma of lung, liver and gut is named as option 1 leukocyte alkaline phosphatase, option 2 beta isoenzyme, option 3 Regan isoenzyme and option 4 pre-beta alkaline phosphatase. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which key feature of tag polymerase allows PCR to be conveniently performed? फर्स्ट ऑप्शन है tag polymerase does not require primers, सेकंड ऑप्शन है tag polymerase does not require templates, थर्ड ऑप्शन है टैग पॉलीमरेज इज हीट स्टेबल एंड फोर्थ ऑप्शन है टैग पॉलीमरेज कैन वर्क एट वेरी लो टेम्परेचर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिवर डिसीज द एलिवेटेड सीरम LDH इज प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन फर्स्ट ऑप्शन है LDH1 एंड LDH2, सेकंड ऑप्शन है LDH2 एंड LDH3, थर्ड ऑप्शन है LDH3 एंड LDH4 एंड फोर्थ ऑप्शन है LDH4 एंड LDH5. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन
In radioimmunoassay, the commonly used gamma emitter radioisotope labeled with half-life of about 60 days is option 1 H3, option 2 iodine 125, option 3 iodine 131, option 4 cobalt 57. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. The next question है the km of an enzyme is first option 1/2 of Vmax, option 2 dissociation constant, option 3 the substrate concentration at half the maximal velocity, option 4 the substrate concentration at the maximal velocity. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. Then next question is DNA fingerprinting is based on option 1 non-repetitive sequence, option 2 sequence polymorphism, option 3 constant tandem repeats, option 4 variable number tandem repeats. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. Then next question है the most suitable traditional method of quantitative assay for pure protein is based on reaction of aromatic amino acids with phosphotungstic acid is first micro-Geldal method, then Volumetric method, third Pauling Q-2 that is Lorry method, and fourth Pauling W method. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. The next question है the degree of unsaturation in a lipid is measured by first option है saponification number, second option है iodine number, third option है acid number, and fourth option है research Michel number. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 that is iodine number. The next question है in reverse transcriptase PCR method that is RT-PCR, the DNA polymerase that has both polymerase and reverse transcriptase activities at high temperature is obtained from first option है Escherichia coli that is E. coli, second one is Thermus aquaticus, third one is Thermus thermophilus, and fourth one is Haemophilus influenzae RD. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. Then the next question is the buffer which is used for nucleic acid separation and typically contains EDTA has low ionic strength and pH range of 7.5 to 7.8 is first option phosphate buffer, second option acetate buffer, third option barbitone buffer, and fourth option tris phosphate buffer. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 that is tris phosphate buffer. The next question है what is the role of sodium dodecyl sulfates that is SDS in SDS page? First option है protein unfolding, second option है imparting net positive charge to the protein, third option है imparting equal mass to all proteins, fourth option है protein denaturing and imparting net negative charge to the protein. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. The next question which of the following techniques is used for the detection of restriction fragment length polymorphism that is RFLPs? First option है northern blotting, second option है southern blotting, third one is western blotting, and fourth one is eastern blotting. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 that is southern blotting. The next question proteins when heated with concentrated nitric acid give a yellow color and when NaOH is added deep orange color is obtained. This test is known as first one is xanthoprotic test, second one is Hope's test, third one is acid base test, and fourth one is biuret test. So इसका करेक्ट आंसर है xanthoprotic test option number 1. The next question is
Prenatal diagnosis is a wide array of genetic disease is based done by. First one is PCR, second one is linkage analysis, third one is RFLP and fourth one is cytometry. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 PCR. Then next question is which of the following is required for DNA synthesis but not for RNA synthesis? First option nucleotides, second option sugar, third option polymerase and fourth option is primer. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. The next question is which of the following separation techniques depends on the molecular size of the protein? First one is isoelectric focusing, second option is gel filtration chromatography, third option is ion exchange chromatography and fourth option is appolicescientific chromatography. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, that is gel filtration chromatography. The next question is dash dash method is used for quantitation of the viruses present in a sample. For example, viral load in HIV or HBV, which would help in planning of the treatment modalities and assessment of the response to the treatment. The first option है nested PCR, second option है real time PCR, third option है रेस PCR एंड फोर्थ ऑप्शन है मल्टीप्लेक्स PCR. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रियल टाइम PCR. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एफिशिएंट बफर सिस्टम इन ब्लड प्लाज्मा अकाउंटिंग फॉर 65% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी इन प्लाज्मा एंड 40% इन द होल बॉडी that regulate pH between 7.35 to 7.45 is first option hemoglobin buffer, second option protein buffer, third option bicarbonate buffer and fourth option is acetate buffer. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 that is bicarbonate buffer. Then next question is इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है. नेक्स्ट वाले पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन थे. अब इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन फिर से केमिस्ट्री के स्टार्ट होंगे और वो सारे क्वेश्चन उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोलेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बैरियम सल्फेट एट 298 केल्विन इज 1.1 into 10⁻⁻10. Which one of the following cases on mixing equal volumes of two solutions at 298 Kelvin shall precipitate barium sulfate? तो उसके ऑप्शन 1 में दिया है 1.1 into 10⁻⁵ m barium nitrates and 1.1 into 10⁻⁶ m sulfuric acid. ऑप्शन 2 में दिया है 1.1 into 10⁻³ m barium chlorides and 1.1 into 10⁻8 m sodium sulfate. ऑप्शन 3 में दिया गया है 1.1 into 10⁻⁵ m barium nitrate and 1.1 into 10⁻⁵ m potassium sulfate. ऑप्शन 4 में दिया है none of these. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस पर मोल ऑफ मैग्नीशियम. रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे Mg plus HNO3 gives MgNO3 twice plus NH4NO3 plus H2O. और उसके ऑप्शन दिए फर्स्ट में 3/4, सेकंड में दिया है 4/3, थर्ड में दिया है 1 एंड फोर्थ में दिया है none of this. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर. तो स्टेटमेंट ए दिया है the alkali salts are largely absorbed by the porous charcoal. Statement B दिया गया है the oxides of noble metals for example Ag are decomposed without the aid of charcoal to the metal which is often obtained as a globule and oxygen. Statement C दिया गया है the oxides of lead copper are reduced to a fused metallic globule. Then statement D है the oxides of zinc cadmium are readily reduced to the metal but these are so volatile that they vaporize.
फिर ऑप्शन 1 में दिया है ए सी एंड डी ओनली, 2 में दिया गया है ए बी एंड सी ओनली, 3 में दिया है बी सी एंड डी ओनली, 4th में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ozonized oxygen at NTP were passed through potassium iodide solution. The iodine liberated required 200 centimeter cube of 0.1 normal sodium thiosulfate for titration. Calculate the percent volume of ozone in the mixture. तो यहाँ पे वैल्यू दिया है O is equal to 16, K is equal to 39, Na is equal to 23, S is equal to 32 and I is equal to 127. तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट में दिया है 14%, सेकंड में दिया है 56%, थर्ड में दिया है 28% एंड फोर्थ में दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 28%। Then next question है match the following flame test with coloration observed through cobalt glass। तो लिस्ट 1 में दिया है सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। लिस्ट 2 में दिया है उसके फ्लेम टेस्ट का कलर कैसा है। फर्स्ट में दिया है ब्लूइश ग्रीन, सेकंड में पर्पल, थर्ड में क्रिम्सन, फोर्थ में गोल्डन येलो, फिफ्थ में नो कलर और सिक्स में दिया है एप्पल ग्रीन। और उनके यहाँ पेयर के ऑप्शन दिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल वाला है। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is the volume of O2 in cm cube evolved at NTP on complete decomposition of 1 cm cube of the H2O2 solution. 25 cm cube of dash dash volume H2O2 solution would decolorize 100 cm cube of 0.27 normal acidified KMnO4 solution। तो उसके ऑप्शन में दिया है फर्स्ट में 5.6, सेकंड में दिया है 6.5, थर्ड में दिया है 25, फोर्थ में दिया है 100। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 cm cube of the solution containing a mixture of oxalic acid and potassium oxalate is titrated against 0.1 normal NaOH. At exactly 5.0 cm cube, the phenolphthalein indicator in the solution become pink. 25 cm cube of the same solution containing oxalic acid and potassium oxalate is heated with 25 cm cube of dilute H2SO4. The hot solution is titrated against 0.1 normal KMnO4 solution. Exactly at 20 cm cube, the KMnO4 drop was decolorized. The amount of oxalic acid and potassium oxalate in 500 cm cube of the solution is dash dash and dash dash respectively. तो यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इनके ऑप्शन दिए यहाँ पे 4। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1.80 G, 1.66 G, 2 में दिया है 3.60 G, 3.32 G, थर्ड ऑप्शन में दिया है 1.80 G, 3.32 G एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है 3.6 G एंड 1.66 G। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 cm cube of aqueous solution with 0.1 molar which reference to a substance is equilibrated with 10 cm cube of ether. At equilibrium, the aqueous layer containing 0.5 millimole of the substance. Calculate the percent extraction. तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से पहला है 97.50%, सेकंड में दिया है 80%, थर्ड में दिया है 95.25% एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 80%। द नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स बेड टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मैच द कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम हॉट वाला है उसमें दिया है ग्रीन, येलो, वायलेट, ब्लू, सेकंड कोल्ड, ब्लू, ग्रीन, रेडिश ब्राउन। देन मेटल वाला है फर्स्ट क्रोमियम, सेकंड निकेल, थर्ड कोबाल्ट एंड फोर्थ कॉपर।
तो उनके पेयरिंग के ऑप्शन यहाँ पे दिए, तो उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलार सोडियम पिनॉक्साइड एट 298 केल्विन। यहाँ पे वैल्यू दिया है Kw इज इक्वल टू 10⁻14, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज इक्वल टू 10⁻10, और उनके ऑप्शन दिए फर्स्ट में 11, 2 में 12, थर्ड में 3 एंड फोर्थ में 2। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 11। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग K2SO4 250 cm³ of solution which is 1.92 ppm with respect to sulfate ion is prepared. The molarity of the solution with respect to the solute is, उनकी यहाँ पे वैल्यू दिया है K इज इक्वल टू 39, S इज इक्वल टू 32 एंड O इज इक्वल टू 16। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 8 इंटू 10⁻5 em, सेकंड ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻5 em, थर्ड ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻6 em एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। The next question is 1.2 g of pure magnesium is treated with excess of hot concentrated sulfuric acid. The weight of the gas evolved is dash dash g. By taking all required care, the salt formed during the process is allowed to crystallize, filtered, washed and dried. The weight of the crystalline product is dash dash gram. तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3.2 ग्राम डैश 12.3 ग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला ही है 100 cm³ of 0.1 m acetic acid in bracket Ka is equal to 1.8 into 10⁻5 bracket complete at 298 Kelvin is treated against 0.1 molar NaOH. The pH of the solution on addition of A 40 cm³ of 0.1 molar NaOH and B 60 cm³ of 0.1 molar NaOH is respectively dash dash and dash dash। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो है ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू को-प्रेसिपिटेशन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट ए surface adsorption and mixed crystal formation are equilibrium processes. Statement B, occlusion and mechanical entrapment arise from the kinetics of crystal growth. Statement C, contamination of a precipitate by a second substance whose solubility product has been exceeded causes co-precipitation. And statement D, it affects purity which can be easily detected. तो स्टेटमेंट 1 में दिया है A only, that is ऑप्शन A में दिया है A only, ऑप्शन 2 B only, ऑप्शन 3 A and B only एंड ऑप्शन 4 A B C and D। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट A, when relative supersaturation is large, the precipitate tends to be colloidal. Statement B, when relative supersaturation is large, a crystalline solid is formed. Statement C, if nucleation predominates, a large number of fine particles are produced. तो ऑप्शन ए में दिया है A only, देन ऑप्शन 1 में दिया है A only, ऑप्शन 2 में दिया है B only, ऑप्शन 3 में दिया है A and C only एंड ऑप्शन 4 में दिया है B and C only। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज A and C only। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलमेगाइट इज एन फर्स्ट, दैट इज A, ore of calcium, B, precipitating agent for calcium, C, protolytic indicator and D, metallochromic indicator। तो ऑप्शन 1 में दिया है A only, ऑप्शन 2 is B and C only, ऑप्शन 3 C only एंड ऑप्शन 4 D only। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज D only। तो इट इज metallochromic indicator। So next question is
For dissolution and digestion of inorganic species of biological samples, which of the following techniques is employed? A. Microwave assisted digestion. B. High pressure digestion. C. Dry and wet ashing. D. Use of ion pair forming agents. तो ऑप्शन 1 में दिया है A ओनली, 2 में दिया है A एंड B ओनली, ऑप्शन 3 है A, B एंड C ओनली, ऑप्शन 4 है A, B एंड D ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज A, B एंड C ओनली. द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द ग्रॉस सैंपल. स्टेटमेंट ए है mass m is proportional to the number of particles. Statement B है degree of heterogeneity is not influenced by the number of particles. Statement C, the Gamel's sampling constant Ks is equal to mass if percentage relative standard deviation is 1%. And statement D, the number of particles required in gross sample ranges from few particles to 10 raised to 12 particles. उसको ऑप्शन 1 में दिया है A एंड B ओनली, ऑप्शन 2 में दिया है A, B एंड C ओनली, ऑप्शन 3 में दिया है A, C एंड D ओनली, एंड ऑप्शन 4 में दिया है B एंड D ओनली. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज A, C एंड D ओनली. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105 mg of impure sample of calcium carbonate containing impurity inert to acid when treated with 0.05 normal H2SO4 exactly at 40 cm cube. The effervescence says the percent purity of the sample is dash dash percent. ऑप्शन 1 में 95.24, ऑप्शन 2 में 94.76, ऑप्शन 3 में 90, देन ऑप्शन 4 में 99. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 mg of pure aluminium 27 is treated with 100 cm cube of 0.05 normal H2SO4. The maximum volume of the gas evolved at NTP is dash dash cm cube. तो इसके आंसर में ऑप्शन 1 में दिया है 112, ऑप्शन 2 है 56, ऑप्शन 3 है 67.2 एंड ऑप्शन 4 में दिया है none of this. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम +3 to aluminum hydroxide precipitates the prepared set of reagent is. फर्स्ट ऑप्शन है NaOH ओनली, सेकंड ऑप्शन है NH3 plus H2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है NH4Cl plus NH3 plus H2 ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन qualitative analysis the ions that could be precipitated in more than one group is or are. फर्स्ट ऑप्शन है Pb++ ओनली, सेकंड ऑप्शन है Mn++ ओनली, थर्ड ऑप्शन है बोथ Pb++ as well as Mn++, एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर Pb++ नॉर Mn++. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज बोथ Pb++ as well as Mn++. द नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 cm cube of 0.2 molar HCl is mixed with 400 cm cube of 0.45 molar HNO3. Assuming there is no change in the volume on mixing, the pH of the resultant solution is approximately. ऑप्शन 1 में दिया है 0.4, ऑप्शन 2 0.6, ऑप्शन 3 0.8 एंड ऑप्शन 4 none of this. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 1.4. The next question, calculate the concentration of Na++ ion in solution that was prepared by mixing 50 cm cube of 0.0 m Na++ with 50 cm cube of 0.05 molar EDTA. The mixture is buffered at pH equal to 3. The equilibrium constant of the reaction दिया है यहाँ पे Na++ plus EDTA gives Na plus EDTA
raised to 2 minus is 1.05 into 10 raised to 8. So इसका कैलकुलेट करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 1. Then next question is, what is the pH of the solution obtained by mixing equal volumes of solution of pH 1 and pH 3? ब्रैकेट में दिया है टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो इनके ऑप्शन 1 में दिया है 0.71, ऑप्शन 2 में दिया है 2, ऑप्शन 3 में दिया है 1.296 एंड ऑप्शन 4 में दिया है नन ऑफ दिस. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, that is 1.296. So friends, यहाँ पे हमने असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर इन द केमिस्ट्री डिवीजन का क्वेश्चन पेपर देखा. ये क्वेश्चन पेपर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी महाराष्ट्र का था जो कि कंडक्टेड किया गया था 7 अक्टूबर 2017. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फोरेंसिक सर्च. थैंक यू.